that everything we do with the tuple, we can do that with list or tuple also. So to sum up, we need a variable sum, and in this we store 0. Done. After that, we iterate each element by value. You can choose any method. For I in T1, done. For I in T1, so यहाँ पे I के पास क्या आएगा? Internally tuple will store like this. 5, 6, 9, 3, 90, 70. And if we index it like this. So now in the very first iteration for I in T1, so T1 assign its first value, that is 5, to I. So what I will get? 5. So here what we have to do, sum equal sum plus I. Done. Now how this expression will get executed? Initially sum contain 0 according to this statement. Second statement, this one is the first, second and third and fourth. Done. According to second statement, sum contains 0. For I in T1, I grab the first value of tuple T1, 5. So sum, what is in sum? 0. Sum equal 0 plus what? I contain 5. So 0 plus 5 become 5. So this value stored in sum. So sum now become 5. Then after that, the control redirect to this point again. And what is the next value of T1? 6. So now this T1 assign 6 to I. I को क्या मिलेगा? 6 मिल गया. Now again condition is true and it will enter into the body of for loop. So for here sum, what is in sum? Sum may have 5 plus 6. 5 plus 6 is equal to 11. So 11 किस में स्टोर होगा? सम में. तो अब सम में 5 ओवर राइट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11. Done. After that, in the third iteration, it again moves to T1. Ma'am, class है फिर बात. Again moves to T1. Now T1 assign its third value, that is 9 to I. So I grab the value, third value of tuple T1, that is 9, and enter in the body of loop. Sum equals sum plus I. Already sum में 11 है. 11 plus what is the value of I? 9. So 11 plus 9, it become 20. So 20 is stored in sum, and again loop will redirect to this position. Now its fourth value, that is 3. Now 20 plus, that is in sum, and I grab 3. 20 plus 3 become 23. From here it moves to T1 and I will get 90. 23 plus 90, 113. Okay. After that, it again redirect to T1 and get assign 70 to I. So at last
the value become 183. That is the value of final value of sum. So यहाँ पे हमने sum को display नहीं करना at this point. Some students try to display sum here. No, don't display here. If you display sum inside the for loop, then output will be what? 5, 11, 20, 23, and 113 and 183. These are the value that you will see on your screen. What we have to do, we have to print this sum outside the for loop. Print sum of all tuple elements. यहाँ पे ये लिखना है all tuple elements equal what? Let me raise it, comma sum. और यहीं पे आपका एवरेज का प्रोग्राम भी बन जाएगा. So what we have to do, print average of tuple elements equal, we have a function length, so sum divide by len, मतलब कि ये लेंथ देगा. How many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this length function, if we pass t1 to this len function, then it will calculate the total number of elements that are stored in t1. So how many elements are there? 6 elements. So at this point, internally, how this statement execute, the value of sum is 183 and the value of length t1 is 6. So approximately it will give me 60. It will generate value 60. If we use single slash, then it will generate 60.5. And if we use double slash, sum double slash length, it means floor division t1, then output will be 60 only. Okay, so come to the ideally, close it. क्लास है फिर बात करो. So this is our ideally, create a new file and save it with the any name with the extension ty. T1 sum of tuple elements dot py extension. So first of all, give a command, program, write a program to find sum of tuple elements. Done. So first of all, I declare a tuple t1 equal and store some value 5, 3, 77, 18, 19, 13. These are the value. I calculate the length L1 in L1 equal len length function t1 this, and after that I iterate for I in t1. I need a variable to calculate the sum. Sum equals 0 and sum equal
sum plus I. You can write this statement sum plus equal I. You can write this statement or this statement. It's up to you. This is the shorthand version of the statement. Okay. After that, print sum of T1 equal sum of all elements of T1. यहाँ पे ये जो T1 है, this T1 print all the values. Okay, and this is the string. So let me save it again and run the program. Okay, sorry, id function is there. Done. So sum of all elements of T1 this इसको sum करोगे तो ये आ गया आपका 135. And if I copy this statement and want to find the average, then average of all element of T1 divide by L1. परमजीत, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने वो क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मैंने ऊपर इसको कैलकुलेट कर लिया. यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट here also, but I already calculate the length, the total number of element by using this function. Okay, and use the value of length here. Okay, so after running it will generate 22.5. but what if I use the floor division operator double slash here and rerun the program? The output is different. Done. The single slash, it means the division operator gave me value, floating point value, that is this one. Okay, but if we use floor division, then it will give me the floor value of that float. 22 की floor value क्या होगी? 22.5 की floor value 22, so it will generate 22. Okay, is there any doubt? So अगर हमने इसको लिस्ट की तरह रन टाइम पे इनपुट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू? अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम पे इसको इनपुट करें, इफ वी वांट टू इनपुट दिस इन रन टाइम, eval input enter tuple elements. Done. After run the program and enter your tuple. The number of values you want to enter, just enter. Done. So in this way we can input our tuple with the help of eval function and input function at runtime also, just like list. Is it clear बच्चा? Is there any doubt? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर. अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपना रेज योर हैंड. If you have no doubt, then raise your hand. Done, 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 done. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं.
सो यहाँ पे हमने क्या करना है नेक्स्ट, जैसे लिस्ट में प्रोग्राम बनाए थे तो फाइंड द total number of even element in the tuple and total number of odd element, positive number, negative number, so वो हम यहाँ पे count कर सकते हैं, and for that we need variable. Suppose we want to write the program to count the total number of even and odd number, so e count comma equal, e stands for even and o count इक्वल 0। इनिशियली हमने सपोज कर लिया कि कोई भी इवन और ऑड एलिमेंट नहीं है, टपल खाली है, डन। सो दिस सम वी डू नॉट नीड, दिस लेंथ वी डू नॉट नीड, and I in this. At this point we have to put the condition. What condition? If I percent modulus 2 equal 0, तो क्या करें, इवन ई काउंट प्लस इक्वल 1, एल्स क्या करे, ओ काउंट प्लस इक्वल 1, उसमें एक इंक्रीज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इवन आइटम्स in your tuple, डन। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, e count। लेट मी कॉपी दिस and paste it, and o count, so odd। so rerun the program, enter the values, done। So count how many odd values are there, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई नहीं है, तो 7 जो है ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई, एंड इवन 1 2 and 3 4 and 5। so this is the program to count the number of even and odd। अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव करना है तो यहाँ पे सिंपली रीनेम करना है, इट्स अप टू यू। PV stands for positive and NE stands for negative। so what condition we have to write here, greater than 0। अगर 0 से बड़ा है then क्या करें, PV पॉजिटिव को बढ़ा दे, और you can write full name, don't get confused। positive negative equal 0, and at this point negative plus equal 1। so total number of positive items in your list, positive, and negative के लिए negative। so let me run this and enter some entries। ओके तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3
and 4, 5, 6. There are total number of 6 positive number and 1, 2, 3 and 4. 4 negative numbers are there in our tuple, this tuple. None. So this is the program to count the positive and negative numbers. Any students wants to ask anything? Anyone? यहाँ पे बेटा मैं दूसरा भी आपको पैटर्न समझा देता हूँ इसी का. देखिए दिस इज द बाय वैल्यू. ठीक है, आई को क्या मिल रही है, T1 की वैल्यू मिल रही है एक एक करके. अगर इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लूं और यहाँ पे बाय इंडेक्स का बना लूं, कंट्रोल एन करके एक नया बना लेता हूँ बाय इंडेक्स. तो इंडेक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ. L1 इक्वल लेंथ of T1. Done. And at this point we have to use a range function. A range what, from 0 to L1, because the total number of element 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होता है ना, 0 से लेके टोटल नंबर अगर 6 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स कितना होगा, 5 होगा. तो ये L1 में आ चुका है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एक कम चलता है और 1 का अपडेट. डन. एंड इट this point we are not allowed to use I now, because I contain index of your tuple now. I is dealing with your index. So what we have to do, T1 का I ये करना है अब हम. क्लियर? सो बाकी सारा प्रोग्राम सेम है. लेट मी रन दिस. पॉजिटिव, नेगेटिव बाय इंडेक्स. चलिए एलिमेंट एंटर करते हैं. 2, 3, -3, -2, -56, 33, minus this, this. Done. Total number of positive elements 2 and 3, 4 and 5. So 5 positive elements are there and negative 1, 2, 3, 4, 5. 5 negative elements are there. Done. So this is by index and the last program is by value. There is no different, you can use any method, there is no problem. Anybody would like to ask anything? Today's class is over. Now this is your doubt session. You can unmute yourself or you can type in the chat box. Those students who do not have any doubt, please raise your hand. And rest can unmute themselves one by one. So let me tell you something. If you have any doubt, then just thumbs up. And if you do not have any doubt, then raise your hand. Okay. There are 2 or many options. आगे से हम ऐसे ही करेंगे. जब मैंने बोला कि आपको कोई डाउट है तो आपने थम्स अप करना है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा. अगर डाउट नहीं हुआ तो बाकी सभी ने अपना हैंड रेज कर लेना है. ओके, थम्स अप करके अपना डाउट पूछ लेना है. सर इवल एंड इंट फंक्शन च डिफरेंस. हाँ बेटा, इवल एंड इंट फंक्शन में डिफरेंट है बेटा. इंट फंक्शन एक वैल्यू लेने के लिए यूज करते हैं. अगर आप इवल की जगह इंट यूज करोगे देन यू आर allowed to enter only one item, but to enter the sequence we use eval. Got my point? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बैंक वाली बुक भी पारस लेनी है आपने. आयुष, wanna ask something, anything? Bablin, Ayush,
Mute yourself if you don't want to ask anything. Rishabh. Vikas beta, any doubt? Shubh Sharma. Manjot, any doubt beta? मंजोत आपने हाथ खड़ा नहीं किया. हर्षदीप कौर, मंजोत, विशु गोयल, आयुष. मंजोत, मोबाइल साइड पे रख दिया क्या? Hello. यस बेटा. Hello. I am speaking, mother of Manjot, sir. यस मैम. Sir, he is not in the meeting. व्हाई? सर एक्चुअली उसने सब्जेक्ट चेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, म्यूजिक के बारे में सोच रहा था. ओके. देन टॉक टू मी पर्सनली मैम. डोंट डिस्कस ओवर हियर. हाँ जी, ओके सर, थैंक यू. Okay beta, your class is over now. I'll upload recording on YouTube. Goodbye.